गुजरात के वडोदरा में एमजीवीसीएल द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर की शिकायत वडोदरा के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही है। वडोदरा में स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा होने की शिकायत पिछले कई दिनों से ग्राहक कर रहे हैं। उपभोक्ता अधिकार संगठन ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर अपना विरोध जताते हुए स्मार्ट मीटर मामले कई मांग प्रशासन से की है। मीटर બળજબરીપૂર્વક लगावવામાં આવ્યા છે, ગ્રાહકોની સંમતિ વગર लगावવામાં આવ્યા છે। જૂના મીટર જ્યારે નીકાળ્યા તેનું રીડિંગ ગ્રાહકને બતાવવામાં નથી આવ્યું, તેના લીધે હમણાં આ બધું હોહા મચી રહ્યો છે। એમજીવીસીએલે ગ્રાહક જોડેથી પરવાનગી લીધા વગર મીટરો જે લગાવ્યા છે તે પાછા લઈ જાય, પાછી પરવાનગી લે અને તેની ચોક્કસ ચકાસણી થાય પછી જ મીટરો લાગશે। ये हमारी मांगनी है। आज कलेक्टर कचेरी में हमें आवेदन पत्र आपका आया है। स्मार्ट मीटर मामले प्रियलक्ष्मी मिल निकट एलके नगर के निवासियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मीटर का विरोध करते हुए इन निवासियों ने मीटर हटाकर नए मीटर लगाकर देने की मांग की है। इस मामले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आक्रोश स्थानीय निवासियों द्वारा जताया गया है। अमन नवा मीटर नहीं जोता, अमन जूना मीटर जे હતા એ અમને આપી દો બસ। અધિકારીઓ કહે છે કે નહીં ચેન્જ થાય, ના કહે છે કે નહીં બદલાય અને દંડ થશે કે નહીં ભરો તો 20,000 દંડ ભરવાનું કહે છે, કદી લાવવાના રૂપિયા। वडोदरा कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष विनोद शाह ने भी स्मार्ट मीटर का अनोखे रूप से विरोध किया। विनोद शाह ने शरीर पर बेल्ट और चैन बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर से 3 गुना ज्यादा बिजली का बिल आता होने की शिकायत की है। नए मीटर गरीब और मिडिल क्लास के बजाय सिर्फ उद्योगपतियों के घर पर लगाने की बात भी इस मौके पर कही गई है। आज स्मार्ट मीटर ने विरोध करवा माटे मैं मारा शरीर पर पट्टा मार्या, सांकड़ो मारी अने प्रजा अधिकारीओने अने जे नेताओ छे एमने जगाड़वा माटे मैं मारा शरीर पर पट्टा मार्या। मारे एमने विनंती है कि प्लीज मेहरबानी करीने हवे आ गुजरातीओने लूंटवानुं बंद करो अने पड़ता पर पाटू ना मारो अरे गुजरातीओने बचाવો। गुजरातीओ तमने खूब प्रेम आप्यो छे, गुजरातीओ तमने खूब वोट आप्या छे। छेल्ला 3 टर्मथी લોકસભાની 3 ટર્મથી તમને 25-26માંથી 26 સીટો આ ગુજરાત આપી રહ્યું છે। ગુજરાતે તમને જે આપી છે, ગુજરાતે આજે તમને વડાપ્રધાન બનાવ્યા છે, ગુજરાતે તમને ગૃહમંત્રી બનાવ્યા છે, તો તમે શા માટે ગુજરાતીઓને છેતરો છો? તમે શા માટે ગુજરાતીઓને મારો છો? તો હવે તમે શું ગુજરાતીઓને નમાલા સમજો છો? તમે એવું સમજો છો કે ગુજરાતીઓને આપણે જેટલું કષ્ટ આપીશું વેઠી લેશે, બધા સહન કરી લેશે? કેમ કે ગુજરાતીઓ તો દાળભાતિયાઓ છે, એમનામાં વિરોધ કરવાની કોઈ તાકાત જ નથી। પરંતુ જોઈ લો, આજે અમે દાળભાતિયાઓ છે, બરાબર, અમે દાળભાતિયાઓ છે તો અમે અમારા શરીર ઉપર કષ્ટ કર્યું છે, પરંતુ સમય આવશે તો અમે આનાથી ઉગ્ર આંદોલન કરી અને આ અધિકારીઓને જગાડીશું। નહીં જાગે તો પછી એના પરિણામ આ સરકારે ભોગવવાના રહેશે।